Before starting today's session, I just want to repeat the intentions of this session. This session is not anything related to any religion, nor related to only Bhagavad Gita as a spiritual book, as a spiritual granth. It's like कि we are reading this book as a seeker, as a student, जहाँ से हमें we can take some guidance, and we all come up and express, read out, and break our barriers, whatever anyone has their barriers, or speaking or coming on camera. कोई भी किसी का भी अंदर से कोई भी ब्लॉकेज है, हम सिर्फ वो रिलीज करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू नॉट जज योर ओन सेल्फ. Whether you are reading right or wrong, don't judge yourself nor judge others. आप खुद को भी जज मत कीजिए कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कम पढ़ पा रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, और कोई और भी दूसरे को प्लीज़ जज नहीं करें. तो लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर. तो वी आर इन चैप्टर 1 ओनली. ओके Saidip, over to you. Two now. Yeah. So I'm starting now. Yeah. Today I will start with Bhagavad Gita, and my skin is burning all over. My mind is quandary and whirling in confusion. I am unable to hold myself steady any longer. O Krishna, killer of the Keshi demon, I only see omens of misfortune. I do not foresee how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. So here Arjuna has addressed Sri Krishna as Keshava, killer of demon called Keshi. Yet for the Arjuna, the thought of killing his own relatives troubled him to such an extent that hold his magnificent bow Gandhiv, which could emit sounds that petrified even the most powerful enemies. Arjuna had become so disillusioned that superstition started gripping him. He could only see bad omens indicating severe devastation. Thus he felt it would be a sin to engage. And Bhagavad Gita 1.32. O Krishna, I do not desire victory, kingdom, or the happiness acquiring to it. Of what avail will be a kingdom, pleasures, or even life itself when the very persons of whom we convert them are standing before us for battle. So here, taking away someone's life itself is immoral, and killing a relative is considered even more sinful. Arjuna was in a dilemma. What would be he gain with victory achieved by such as heinous act? It would not give him any joy, as he would have lost all the people who mattered to him. Detachment to worldly asset is a commendable virtue. Even though Arjuna's thoughts were moral and virtuous, they were not spiritual sentiments. They were budding out of compassion and attachment toward his relatives. Spiritual sentiments bestow peace, harmony, and happiness to a soul. However, Arjuna's situation was threefold. Teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, grandsons, father-in-laws, grandnephews, brother-in-law, or other kinsmen are present here, staking their lives and riches. O Madhusudan, I do not wish to slay them, even if they attack me. If we kill the sons of Dhritarashtra, what satisfaction will we derive from the dominion over 3 worlds? What to speak of this earth?
So, the essence of this, Arjuna looked at the vast gathering of warriors on the battlefield and started considering his relationships with them, his teachers Dronacharya and Kripacharya, grand uncle Bhishma and Somadatta, Bhurishwara and Kunti Bose, Purijit, Shalya and Shakuni, his maternal uncles. That 100 Kauravas were his uncle Dhritarashtra's sons, their sons, grandsons, and several Several other relatives had all assembled there. Dhritarashtra's sons, grandsons, several the relatives had assembled there, prepared for a battle till death. Twice in the verse, Arjuna used the word api, which means even though. He addresses Sri Krishna as Madhusudan, the killer of a demon named Madhu, and says, "O Madhusudan, I do not wish to kill them, even though I am aware they are eager to do so." Again, he says, "Even though for the sake of victory." So, next 1.36. O maintainer of all living entities, what pleasure we will derive from killing the sons of Dhritarashtra, even though they may be aggressors. Sin will certainly come upon us if we slay them. Hence, it does not behoove us to kill our own cousins, the sons of Dhritarashtra. And friends, O Madhav, how can we hope to be happy by killing our own kinsmen? So the essence of this, similar to the previous verses, Arjuna continues to explicate his unwillingness to kill his relatives by using the words "even though," again addressing Sri Krishna as Janardana, sustainer of the populace. He said, "Even though I am aware that they are willing to attack us, I feel it would be a sin to kill my uncle Dhritarashtra's sons." Then addressing him as Madhav, goddesses Lakshmi husband, Arjuna said, "It is not proper on our part to kill our cousins and relatives. How can we ever be happy by doing such a deed? Under most circumstances, killing or taking someone's life, it's considered a grave sin, which subsequently causes guilt or repentance. That Vedas state, do not kill any living being unless absolutely necessary. In an extreme situation, violence in any form is a sin, and non-violence a superior virtue. In Arjuna's case, even though the enemy's wrong deeds were unpardonable, he was not willing to kill them, considering it to be immoral. In order to protect themselves from such enemies who have set fire to their property, tried to possession them, conspired to murder, loot their wealth, kidnap or dishonor their women, or seize their kingdom. Even the Manusmriti mentions that it is not considered a sin if someone kills an attack in self-defense. Their Bhagavad Gita 1.38. Their thoughts are overpowered by greed and they see. So the essence for that, Arjuna was a proclaimed warrior, but due to his righteous nature, he tried to avoid violence whenever possible. This side of his character is very well revealed in an incident that took place towards the end of the Mahabharata war. Duryodhana was badly injured and only a handful of warriors were remaining on the Kaurava side. Ashwadama was one of them. He wanted to
avenge his father Dronacharya and his friends Kaurava's death. He sneaked into the Pandava camp at night while everyone was fast asleep and went on a carnage. Several warriors, including Draupadi, 5 sons, were killed in this attack. The Pandavas, along with Draupadi and Sri Krishna, were away that night. When they returned to the camp, they were devastated. Arjuna went after Ashwadama, caught him, and threw him at the feet of Draupadi, who was grieving the death of her 9 sons. Bhim was raised and wanted to kill Ashwadama right away, but Draupadi was a soft-hearted lady of forgiving nature. She said that Ashwadama was their guru, Drona's son, and a Brahmin. Therefore, they should forgive him. Arjuna was unsure what to do next and wanted guidance from Sri Krishna, who then said a respect-worthy Brahmin must be forgiven even if may have temporarily fallen for virtue. But a person who approaches to kill with a lethal weapon must certainly be punished. Arjuna understood that what the Lord meant. He did not kill Ashwadama. Instead, he cut his Brahmin's throat, removed the jewel of immense power from his forehead, and let him go. One should not squabble with the Brahman who performs the fire sacrifice. The family, priest, teacher, maternal uncle, guest, dependent children, elders, doctors, or relatives. Arjuna was aware that killing one's own relatives was a great sin. He said to Sri Krishna, "Greed has blinded them, Kauravas, and they do not realize that it is a great sin to kill their own relatives and friends. But why should we do the same thing? A dynasty is destroyed, its traditions get vanished, and the rest of the family becomes involved in irreligion." Bhagavad Gita 1.40 Essence. The elder members of the family bear age-old traditions, customs, ideals, and noble values of a community, which they pass on to their next generations. These traditions help nurture moral values in families and build religious property in a society. If the elders die early, their value. Bhagavad Gita 1.42. An increase in unwanted children results in hellish life both for the family and for those who destroyed the family. Deprived of sacrificial offerings, the ancestors of such corrupt families also fall. Lessons of 1.42. An increase in unwanted children result. There is no. Okay. Bhagavad Gita 1.43. Though through the evil deeds of those who destroy the family traditions and thus give rise to unwanted progeny, a variety of social and family. Bhagavad Gita 1.44. O Janardhan, I have heard from the learned that those who destroy family traditions dwell in hell. Alas, how strange it is that we have set our mind to perform this great sin with horrifying consequences. Driven by the desire for kingly pleasures, we are intent on killing our own kinsmen. It would be better if with weapons in hand the sons of Dhritarashtra kill me unremitted and unresisting on that battlefield. So, essence of 1.54. Arjuna was surprised despite being aware that this war would only
bring misfortune to all. Those who were in the battlefield and the families they would leave behind, they were all hankering to commit this sin. He started with the word oh, oh, which means alas. His hand en, en, enumerated all the possible catastrophes that were imminent if this war took place, but he was ignoring the very fact that if the wrongdoers were not punished, it would cause greater damage to the society. Often we keep blaming the circumstances or others, but turn a blind eye towards our own weakness. Arjuna's justification for not killing his greedy cousins and relatives was driven by his own attachment and compassion toward them. Even though he felt it was a sin to kill them, as they were his relatives, he did not realize his sentiments were actually materialistic and not transcendental. So blinded by compassion, he had forgotten his dharma as a warrior, that he was beyond his material body. His delusion had come to a point where he was willing to drop his weapons and allow his enemy to kill an arrows, and sank into the seat of his chariot, his mind in distress and overwhelmed with grief. The essence of 1.47 Arjuna's reluctance to fight the war and had now reached its climax. He had now surrendered to his grief and slumped into deep dejection. His condition was the creation of his own material attachments and caused his dereliction of duty. This was completely unexpected behavior from someone who was considered the epitome of devotion and self-surrender to God. In fact, before the battle, when both parties were mobilizing their armies, given a choice between the entire armored Yadu army and the unarmored Lord Sri Krishna, Arjuna chose the Lord, as he had a complete faith in him. At this point, let us consider who Arjuna really was. He was definitely not a novice, bereft of spiritual knowledge. His celestial father was Indra, the king of heaven. Arjuna had been to his abode and received several boons from him and other celestial beings. In his past life, Arjuna was not part of the twin descensions, the Narayan, where Nar was perfected soul situated in transcendental knowledge, and Narayana, the Supreme Lord. Then why in the battlefield of Kurukshetra, a grand warrior of such a stature was dropping his weapons? What was the cause of his misery? For the benefit of future generations, Sri Krishna wanted to bring forth the knowledge of the Bhagavad Gita by intentionally confusing Arjuna that the Lord had created this opportunity in this chapter. Arjun put forth to the Lord several arguments and justifications why he should not fight
Sri Krishna has elaborated upon why Arjuna's arguments were inappropriate and the way forward. So first chapter completed. Okay. I just read. Okay. So in this chapter, the initially the whole situation was कि जहाँ Dhritarashtra was blind, he was not able to see the war situation, but Sanjay was narrating this event. तो संजय उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे वॉर की सिचुएशन है. तो वहाँ पे मतलब मेरी लर्निंग क्या थी दैट टाइम, मेरी मतलब मुझे लगा कि बीइंग ब्लाइंड मतलब आप अंधे बन के अपने जो उनको अपना बेटा सही लग रहा था, उनको लग रहा था कि वो ही जीतेगा, मतलब उनको लग रहा था कि सही और गलत में दे आर नॉट एबल टू सी द ट्रुथ, उस सही सही सच को नहीं देख पा रहे. और अभी उन्होंने अब जो अभी आपने चैप्टर पढ़ा, अर्जुन जो है वो कृष्णा से पूछते हैं कि हम अपने ही कजन्स को, अपने ही रिलेटिव्स को, लोगों को मार रहे हैं, वी आर किलिंग आवर ओन पीपल, तो इट्स अ सिन, ये सही नहीं है, ये पाप है अपने लोगों को मारना. तो अर्जुन कन्विंस नहीं थे कि मैं ऐसा करूं. तो कृष्णा ने उन्हें एड्रेस किया कि अगर ये पांच पांच केसेस थे ना जिसमें किलिंग इज नॉट हार्मफुल, जहाँ पे अगर आपको कोई पॉइजन दे रहा है या आपकी कोई वुमेन के साथ मिसबिहेव हो रहा है या आपकी लैंड के साथ कुछ आपकी लैंड कोई ऑक्यूपाई कर रहा है या आपकी टेरिटरी कोई ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को किल करते हो तो दैट इज़ नॉट अ सिन. तो अर्जुन उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे भागवत गीता ने के के थ्रू भागवत गीता वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम 3D वर्ल्ड की जो हमारे रिलेटिव से ऊपर उठ के हमें उस लेवल पे सोचना है जहाँ पे सही और गलत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मतलब ट्रुथ का सपोर्ट करना है. वहाँ पे हम ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने हमें अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं, हमारी फैमिली के जो बिलीव्स हैं, वो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उसको बताया है कि बड़े लोग की रिस्पेक्ट करनी है या कजन्स को लव देना है, हार्मनी पीस में रहना है. बट इन केस कभी जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है तो वहाँ हम स्टैंड लेके उनको किल भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ माई लर्निंग. एंड और कोई शेयर करना चाहेगा? नैना जी, अनीता जी, आप हैं यहाँ पे? गोपाल, आप शेयर करना चाहोगे? कोई भी वॉलेंटियर, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर यहाँ क्या लर्निंग्स. और कौन है? निताशा जी, आइए सामने, खोलिए अपने ये वीडियोस. नमस्कार मैम. नैना जी, आप म्यूट पे हैं मैम. आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं ना अपने आप को? और मैम अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, हाँ, मैं भी आपसे आत्मवंदन मैम. सहमत हूँ. हाँ, आत्मवंदन. मैं भी आपसे सहमत हूँ जो आपने बोला अभी. जी मैं भी वैसे ही सोच रही हूँ. मेरा भी वही लर्निंग लग रहा है मुझे. तो मतलब वही, हमको अपना स्टैंड लेना चाहिए. जब जरूरत पड़ रहा है तो हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, और उस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने कौन है. जी, आई थिंक ये हमारी ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारी अपनी लाइफ में भी आती है. आ जाती है. जी जी जी, अभी जी. जैसे मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देखती हूँ जहाँ पे मेन आर फेसिंग देयर अब्यूसिव वायलेंस, मतलब औरत हम्म. आदमी पे हाथ उठा रही है, या इट्स नॉट अबाउट कि हाँ. आदमी या औरत, इट्स जी. अबाउट कि आप किसी पे भी, ना आदमी को राइट है औरत पे हाथ उठाने का, ना औरत को हाथ हम्म. राइट है आदमी पे हम्म. उठाने का. इट्स अबाउट सोल इक्वालिटी. आप किसी को भी मत दबाइए. बच्चे माँ बाप पे हावी हो रहे हैं या माँ हम्म. बाप बच्चों को दबा रहे हैं, दोनों ही हम्म. गलत है.
तो शायद कल आज जैसे वो भागवत गीता। अनीता जी ने बोला था, कल जी। अनीता जी ने यही बोला था कि घर घर में ये महाभारत चल रही है। जी। तो जी, तो हमें वही है ये। जहाँ हाँ। कई बार ये होता है सिचुएशन कि बच्चा गलत बोल रहा है और माँ उसके माँ बाप है उसके मुंह में गलत पे गलत करे चले जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो गलत कह रहा है। इट्स नॉट कि वो बच्चा है इसलिए हमें उसकी हर बात मान जानी है। आप वहाँ पे अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं एज अ पेरेंट, तो वहाँ आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमें कल्चर ये सिखाता है कि बच्चे की वो करो, परवरिश करो, अच्छा खान पीन दो, सब कुछ दो। लेकिन जहाँ बच्चा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अपनी बाउंड्री पार कर रहा है, वहाँ आपको स्टैंड लेना होगा। तो जी। मैं जी। सेल्फ लव ही सिखाती हूँ मोस्टली। तो मेरे लिए इस लेसन, इस पूरे चैप्टर का मकसद ही शायद सेल्फ लव ही है। भगवत जी। गीता में हमें सेल्फ लव ही सिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको अपनी बाउंड्री बनानी आनी चाहिए, आपको अपने हाँ। लिए भी खड़ा होना आना चाहिए। जी। जी, सही है। चाहे सामने कोई भी हो, गलत है तो उसको गलत बोलना हमको आना चाहिए। जी। थैंक यू मैम फॉर द शेयरिंग। और आप भी अपना नाम दीजिए, आप भी पढ़िए चैप्टर। हाँ, दिया है मैंने, 26 का दिया है मैंने नाम। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे कि इंग्लिश में। और नहीं, कोई हिंदी में, हिंदी कोई में। वो नहीं है, पढ़ने पर कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ना कोई मार्क्स कटने हाँ, वाले हैं। नहीं, मैं हिंदी में ही पढ़ना चाहूंगी। तो कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे भेज देंगे आप कि क्या, हाँ, कैसे अभी होगा ना वो? जैसे हमें 2 दिन लगे हैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में। जी। तो वो जैसे जैसे जब आपका आएगा ना, हम तब कंटिन्यू देख लेंगे कि एक दिन पहले कहाँ ठीक ख़त्म है। हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। जी। आ, कौन है? हाँ जी, निताशा जी, वेलकम। आत्मबंधन। जी, आत्मबंधन। मुझे जो पहले अध्याय से लगा है, बोथ वेज एज पेरेंट्स ऑल्सो धृतराष्ट्र से सीखा है कि अपने बच्चे के, अपने औलाद के लिए इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए उनके प्यार में कि उनका भला बुरा ही हम ना देख पाए। सही टाइम पे उनको डांटना, टाइम पे लाड करना, हर चीज जरूरी है, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम की अभी सिचुएशन क्या है। अगर डांटने की जरूरत है तो डेफिनेटली डांटना चाहिए। कभी बहुत ज्यादा कठोर भी होना पड़ता है उनकी ही भलाई के लिए। और जी। दूसरा, जहां तक अर्जुन का देखा है, अभी सुना पढ़ा हमने, तो अपने लिए, जैसा आपने बोला, अभी आप ही ने बोला कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। दुनिया से हम तभी प्यार करेंगे जब हम अपने आप से प्यार करेंगे। खुद का ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, अपने लिए स्टैंड लेना, सही के साथ भी सपोर्ट करना, और कहीं गलत हो रहा है वहां खड़े होकर भी अपनी आवाज सही के लिए उठाना, तो वो बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई लर्न। अभी तो हमने, मुझे ऐसे लगता है कि गीता को जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार कुछ नई चीज ही दिखती है हमेशा। जी। जी। एंड मुझे एक और और मुझे लगता है हम चीज जितनी चेक बार करना था हम। कि मैंने अपना जी जी। नाम। भागवत हाँ, गीता क्या, बोलिए मुझे प्लीज। लगता है कोई भी किताब अभी हम एक बार पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर ये जी, सेम चैप्टर हम दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ और नया, नई लर्निंग होगी। सबकी अपनी बिल्कुल सही, लर्निंग है। बिल्कुल सही। जैसे सबकी जैसे अपनी हमारी लर्निंग है। विजडम हाँ बढ़ेगी, जी। जैसे जैसे करेक्ट। हमारा विजडम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हमारा उसके बारे में अलग अलग राय आती जाती है, अलग विजडम भी, और लर्निंग होती जाती हमारी सिचुएशन भी हर है, बार अलग हमारे जो होती है। सिचुएशन लाइफ में। हाँ। हाँ जी। 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 तो अभी हमारे पास ना 1 ही मिनट है। मैम आप शेयर कीजिए। निताशा मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी। मैं ये बोल रही थी कि अगर हमें, मैंने अपना नाम दिया है एक रीडिंग के लिए, तो अगर कोई और डे फ्री है तो मैं उसमें भी वॉलंटियर करना चाहूंगी रीडिंग के लिए। आप अ, डाल दीजिए, आपको जहाँ पर भी लगे आप अपना डाल नाम दूँ? डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल सकते हैं ना, एक से ज्यादा दिन डाल सकते हैं? पहले कोशिश ये थी ठीक कि है। सब लोग आगे आए, ताकि सब लोग अपना जो भी अगर फियर है तो उसको बाहर मौका मिल रहा है जी रिलीज आउट करने का। क्योंकि देखो कल जी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम चाहे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लेकिन हम जी इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनना है हमें कि हमें परफेक्ट रीडर होना है। हमें तो खाली जी लेसन लेना है यहाँ से। और अगर हम कैमरे के आगे आके अगर अपना फियर को ओवरकम कर पाते हैं, अपने आप को जी एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आई थिंक भगवत गीता का एक चैप्टर तो हमने ही कवर कर लिया। मतलब अपने डर से निकल पाना, ये भी तो एक भगवत